So welcome students. In this module, let us look at the topic of simultaneous linear equations or pair of linear equations. हमारा टॉपिक क्या है? Simultaneous linear equations. Sorry, TIONS, simultaneous linear equations, or simply pair of linear equations. In some textbooks, this chapter is called by the name simultaneous linear equations. In some textbooks, it is called by the name pair of linear equations. So what is the basic concept of this chapter? This is a continuation of the chapter of linear equations in two variables that you have learnt in your lower classes. So linear equation in two variables, ये आप already पढ़ चुके हैं. How does a linear equation in two variables look like? Ax plus by plus c is equal to 0. An equation of this form is called a linear equation in two variables. And linear equation in two variables के बारे में आपको क्या क्या knowledge है? The graph of this is a straight line. You know that if you draw the graph of this linear equation in two variables, you get a straight line. And this equation has infinite solutions. So any pair of x and y, any pair of values of x and y which satisfies the equation is called a solution. And a linear equation in two variables have infinite solutions. वो सारा infinite solutions को एक ग्राफ शीट में प्लॉट किया तो if you plot all the infinite solutions on a Cartesian system, the graph will be a straight line. And for example, x plus y minus 4 is equal to 0. So this is a linear equation. इसे ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? So you take a graph. Once you know that the graph is a straight line. To plot a straight line, you need at least 2 points. So कोई भी 2 points और कोई भी 2 solutions आप इस equation का ढूंढना पड़ेगा. So you search for at least 2 solutions. So सबसे easy solutions आप ढूंढने के लिए कोशिश कर सकते हैं. आप देख सकते हैं, if x is equal to 0, just draw a table x and y. So the simplest solutions are, if y is equal to 0, x is equal to 4, right? y 0 है तो x 4 होगा, x 0 है तो y 4. So one of the point is 4, 0. The other point is 0, 4. So this graph passes through these 2 points and it is a straight line. So obviously, वो graph क्या होना चाहिए? It is a straight line which passes through these 2 points. So this will be the graph. And every point on this graph satisfies this equation x plus y is equal to 4. So once you draw the graph, every point on this graph satisfies this equation. Point satisfy करने का मतलब क्या है? Point का x coordinate and y coordinate जो है. So these two, if the first coordinate is x coordinate, the second coordinate is y coordinate, they satisfy this equation. So this line is the set of all the solutions to this equation. And every point on this graph satisfies the given equation. So graph के बारे में आपको, this is the knowledge that you need to have. And what else? So two linear equations are same
are identical if, what is the condition? Two linear equations are identical if the condition is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. मान लीजिए दो लीनियर इक्वेशंस हैं. These two equations are identical if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Ratio of every coefficient, if it is same, then the two linear equations are identical. इसका मतलब है x plus y minus 4 is equal to 0. ये पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2x plus 2y minus 8 is equal to 0. ये पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. 3x plus 3y minus 12 is equal to 0. So all these equations are identical. ये सारा जो है अलग अलग इक्वेशंस नहीं है. On the face value, they look like different equations. But the graph of all these three equations is the same line. समझ में आ रहा है? क्योंकि x plus y अगर 4 है तो 2x plus 2y क्या होगा? 8 होगा. 3x plus 3y क्या होगा? 12 होगा. So all these three equations represent the same information. ध्यान दे दीजिए. They represent the same information. ये नया वर्ड है. मैं बोल रहा हूं इक्वेशन और इंफॉर्मेशन. इक्वेशन इंफॉर्मेशन में व्हाट इज द लिंक? सो एवरी इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ए फिजिकल इंफॉर्मेशन. एंड कोई भी आपको मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है उसको आप एक इक्वेशन जैसा लिख सकते हैं. ठीक है. इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस. Equations can be transformed as some physical conditions or some physical information. ठीक है. So x plus y minus 4 equal to 0 का मतलब क्या है? इसको आप एक फिजिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसा सोच सकते हैं. मेरे पास कुछ पैसा है, उसके पास कुछ पैसा है. So I have x rupees with me, the friend has y rupees with him. But the sum of these two is always equal to 4. So if this is the physical information, what is the corresponding equation? X plus y equal to 4. So if the sum of the money that I have and my friend has is equal to 4, so x plus y equal to 4 तो equation है. 2x plus 2y equal to 8 is also a valid equation. मेरे पास जो मनी है उसको डबल करो, उसके पास मनी जो है वो डबल करो, दोनों को ऐड करने के बाद 8 तो आएगा, ट्रिपल करने के बाद 12 तो आएगा. So all these three informations are same. Hence all these three informations have the same graph. समझ में आ रहा है? That means the graph of this, the graph of this, the graph of this are coincident lines. सारा lines same है. So these are some pieces of knowledge that you already have in your lower classes. ठीक है. अब इस knowledge के ऊपर हम build करेंगे. Clear है? So now the topic that you have is called simultaneous linear equations. इसका मतलब है at one point of time you're dealing with two linear equations. अभी तक हम क्या किया? We are dealing with only one linear equation. Now we are simultaneously dealing with two linear equations. So let us see how we do that. So let us take an example. Let us take an example. Okay. So देखिए. So let us take x plus y is equal to 4 is a linear equation. So this is a linear equation number 1. And 2x plus 3y is equal to 10. This is the second linear equation. So what is the solution of these two simultaneous linear equations? If the question is what is the solution of these two simultaneous linear equations,
इसका मतलब है एट द सेम टाइम x प्लस वाई, दो नंबर्स का सम 4 होना चाहिए। फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिए, सेकंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, द आंसर शुड बी 10। So are there some values of x and y which satisfy both these linear equations simultaneously? That's the question. अब देखिए इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीका है। So first thing that we are going to learn is an extension of our knowledge from our lower classes. So हम linear equations का graphs के बारे में पढ़ चुके हैं। So let us try to solve these two equations in terms of graphs. So linear equations को एक ग्राफ जैसा सोचा तो ये दोनों linear equations का simultaneous solution क्या होगा। So first देखिए, so if you take x plus y is equal to 4, this equation has infinite number of solutions. This equation also has infinite solutions. But हमको ऐसा एक x and y चाहिए जो दोनों equations को simultaneously satisfy करेगा। So उसके लिए मेरा लॉजिक ऐसा है, फर्स्ट मैं क्या करता हूं, एक ग्राफ शीट लेता हूं। If I think of a graphical solution to this, if I think of a graphical solution to this, ठीक है। So let us take some scale on this. Okay. X-axis पे 1, 2, 3, 4. This is what you do when you draw a graph, right? 1, 2, 3, 4. Y-axis may be 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Okay. थोड़ा सा ऊपर तक जाएंगे। क्लियर? सो 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, 0, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4. So you can take a graph sheet and draw the graph. So first, what is the graph of the first linear equation x plus y is equal to 4? So we know that the graph of a linear equation is a straight line. एक straight line का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। ऑलरेडी हम x plus y equal to 4 का ग्राफ देख चुके हैं। So this passes through 4, 0 and 0, 4, right? So if you draw the graph, you get a straight line. देखिए, get a straight line. So what is the meaning of this line? देखिए, every point on this line satisfies which equation? X plus y is equal to 4. So these are the infinite solutions of the first equation. Now let us go to the second equation. Second equation क्या है? 2x plus 3y is equal to 10. So इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोशिश करेंगे। So x and y. So y को 0 पुट किया तो देखिए y 0 पुट किया तो x is simply 5, right? So y 0 है तो 2x is equal to 10, x is equal to 5. So is there any other nice solution to this? So y 0 है तो काम कर रहे हैं। y अगर 2 है तो if y is equal to 2, देखिए if y is 2, 3 into 2 is 6, 10 minus 6 is 4, 4 by 2 is 2, right? इसके बाद अगर y का वैल्यू 0 हो गया, 2 हो गया, अगर 4 है तो अगर एक और सोल्यूशन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन एक और सोल्यूशन लेंगे, देखते हैं। सो 3 into 4 is 12, so 2x plus 12 is equal to 10, 2x is equal to -2, x is equal to -1. So 5, 0 is a solution, 2, 2 is a solution, -1, 4 is also a solution. So 2 points are required.
बट आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है 5,0, इसका मतलब एक और पॉइंट चाहिए मुझे. ठीक है, एक और पॉइंट चाहिए. 5 इज समवेयर हियर. सो 5,0 इज दिस पॉइंट. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट इज 2,2. देखिए, और -1,4 प्लॉट करेंगे. -1,4 देखिए अप्रोक्सीमेटली. -1,4 इज समवेयर हियर. सो ये दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लेता हूं. सो दिस विल गिव मी द ग्राफ ऑफ the second linear equation. So what is this green line? So this green line का description है every point on this line satisfies 2x plus 3y is equal to 10. Okay. So now the thing that I need is I want such a point which satisfies both these equations. So आप logically देखिए, is there a point which satisfies both these equations? So ये दोनों lines जो है आप ध्यान से देखा तो इस point पे meet कर रहे हैं. Let this point be P. So this point P lies on the first line as well as the second line. इसका मतलब क्या है? This point P satisfies the equation x plus y equal to 4 as well as the equation 2x plus 3y equal to 10. इसका मतलब है this point P, इसका जो भी coordinates है, this point P is the simultaneous solution of these two equations. So the coordinates of the point of intersection, the coordinates of the point of intersection is the simultaneous solution of both equations. Is it clear? So अगर आप यही ग्राफ एक अच्छे सा ग्राफ शीट में टू दी स्केल परफेक्टली ड्रॉ किया तो यू गेट ए पॉइंट. इसका कोऑर्डिनेट्स आप नोट कर लीजिए. वॉट एवर आर द कोऑर्डिनेट्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस. समझ आ रहे? सो इसका कोऑर्डिनेट्स अब हम थोड़ा सा इसमें रफली देख सकते हैं. देखिए, सो दिस लुक्स लाइक, दिस पॉइंट लुक्स लाइक, does this point look like 2,2? Point 2,2 जैसा लग रहा है. So that means this 2,2 is the simultaneous solution of these two equations. 2,2 is the simultaneous solution. आप चाहिए तो चेक भी कर सकते हैं ग्राफ से. This is what we have found. एक बार चेक भी कर लीजिए. 2,2 does it satisfy the first equation? देखिए 2 plus 2 equal to 4, right? Does it satisfy the second equation? 2 into 2 4, 3 into 2 6, 4 plus 6 is equal to 10. So hence we can also verify that our solution is correct. You can also verify that a solution is correct. So what is the theory? If you have two linear equations, ग्राफ से अगर उसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन आएगा. सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन आएगा. दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी है, दैट इज ए कॉमन सॉल्यूशन. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस पेयर ऑफ इक्वेशंस. सिंपल है. अब हम इसी लॉजिक के ऊपर बिल्ड करके अगला टॉपिक में जाएंगे.